Welcome back, viewers. Today we're gonna learn about supervised machine learning. In our previous video, we have learned about the introduction of machine learning. So, what is supervised machine learning? You know that there are four type of machine learning: supervised, unsupervised, semi-supervised, and the reinforcement machine learning. So, in the first type of learning is the supervised learning. So, supervised learning is a type of machine learning in which machines are trained using well labeled training data. And on the basis of that, machine predict the output. The labeled data means some input data is already tagged with the correct output. In the definition, we can also say that the supervised machine learning is working when the data is provided in the case where answer is known, and it's denoted as qi plus g, where qi basically is the my datas or my questions, and g is the levels, the answers. So in supervised machine learning, the training data provided to the machine work as a supervisor that teaches the machines to predict the output correctly, and it applies the same concept as student learns in supervision of the teacher. So ये जो है ये सुपरवाइज लर्निंग में हम डेटा को दे रहे हैं मशीन को टू लर्न. सो जो जितना ज़्यादा हम डेटा देंगे मशीन उतना ही ज़्यादा अच्छा लर्न करेगा एंड करेक्ट आउटपुट देगा. So the accuracy will be increased when we are giving more data. And इस डेटा देने के टाइम हम कुछ डेटा का कुछ नहीं सब डेटा का आंसर दे देंगे. when in the term of semi supervised learning हम कुछ डेटा देंगे एंड आई मीन कुछ डेटा का आंसर देंगे एंड कुछ डेटा का नहीं देंगे, बट इन सुपरवाइज लर्निंग हम सब डेटा का ही एक लेबल कर देंगे. And it's a mathematical term that is supervised learning is a process of providing input data as well as correct output data to the machine learning model. The aim of the supervised learning algorithm is to find a mapping function to map the input variable, that is the x, with the output variable y. And in the real life example, you can see that we use this supervised machine learning in risk assessment, image classification, fraud detection, and spam filtering. In the coming lecture video में हम कोडिंग के द्वारा ये सभी एग्जाम्पल देंगे जो कैसे हम ये करेंगे इन पाइथन कोडिंग. So next is how supervised learning works. So this is the diagram that how it works, and in supervised learning, models are trained using labeled datasets. What I told you before, and where the model learns about each of the data. Once the training process is completed, the model is tested on the basis of test data. There is a subset of training data. So in Python coding में भी हम देखेंगे जो हम from the overall input data we have to split the data set. बेसिकली हम 8:2 और 9:1 बेसिस से डिवाइड कर लेते हैं जो कि हमारा. So अब फॉर एग्जांपल यू कैन आई कैन से दैट द टोटल इनपुट डेटा इज 100. सो हम 90 डेटा को हमारा ट्रेनिंग डेटा हिसाब में ले रहे हैं एंड 10% को हमारा टेस्टिंग करने के लिए रख देंगे. एंड ये एक चीज़ है जो सुपरवाइज मशीन लर्निंग में यूज़ होता है, जो कि हम जो जिस तरह के इनपुट डेटा हम देंगे एंड वी हैव टू गिव द सेम टाइप ऑफ आउटपुट लेवल्ड डेटा एज अ टेस्टिंग डेटा. ये एग्जांपल से आपको ये कम्प्लीटली समझ में आ जाएगा. So that's my level data. So you have a different kind of structured here. Okay, so this is a hexagon, this is a triangle, and this is squares. So these three type का level data type है. So यहाँ पर लिखा भी है जो levels कौन सी है. That is a hexagon, these are squares, and these are triangles. And here we have a large amount of data and level data, of course. Okay, so now I am giving this data into my model where it will be trained. Okay, so this is my model training, and हम डेटा भी देंगे और उसके साथ उसका लेवल भी देंगे एक साथ. Now in the prediction time from my test data I am giving it that now computer बोलो तो जी ये structure क्या है, what is this. Now it will predict me that yeah, it's a square and it's a triangle. It will predict and now it's learned. यहाँ पर और एक भी कॉन्सेप्ट है. व्हेन आप पाइथन में कोडिंग करोगे आपको ये ध्यान में रखना पड़ेगा जो ओवरफिटिंग ना हो जाए. बिकॉज ओवरफिटिंग, इफ इट्स ओवरफिटेड देन द मॉडल विल मेमोराइज्ड नॉट लर्न. सो इसलिए हमको ह्यूज डाटा देना पड़ेगा, बट उसके एक
अमाउंट नंबर ऑफ डेटा है जो कि देने से ये एक्यूरेसी हाई में जाएगा। सो ये ध्यान रखो आप। अब 5000 आपका इमेज है तो आप 5000 इमेज दे दिया एज ए इनपुट डेटा। बट ये एक प्रॉब्लम हो सकता है, जो लेवल है से जस्ट दो टाइप के लेवल है। दैट इज, या पिक्चर में आप ब्रेन का ट्यूमर या ब्रेन इमेज है, एमआरआई इमेज। सो इफ दैट इमेज वन टाइप ऑफ डेटा इज, इसका ब्रेन के अंदर ट्यूमर है और इसके ब्रेन के इमेज में ट्यूमर नहीं है। सो दीज आर टू लेवल्ड डेटा सेट फॉर एग्जाम्पल, एंड यू आर गिविंग 5000 डेटा। सो जो ओवरफिटिंग जो हो जाए, इफ ओवरफिटिंग हो जाएगा, देन दैट विल बी अ ट्रबल, इट विल मेमोराइज देन। सो अब जो पिक्चर देगा ये इसको याद में रख देगा और बोल देगा जो है इसके अंदर है और इसके अंदर नहीं है। तो ये बहुत ही बुरा चीज़ है। सो दैट्स व्हाई वी नीड द कॉन्सेप्ट ऑफ ओवर फिटिंग एंड वी हैव टू डिलीट सम डेटास टू गिव अ परफेक्ट अमाउंट ऑफ लेवल डेटा जो इसमें लर्न करे। नाउ हम टेस्टिंग डेटा में हम दूसरे काइंड ऑफ जो डेटा है हम दे रहे हैं एंड इसको बोल रहे हैं जी इसको ये क्या है बोलो। ये चीज़ एक चीज़ आप ध्यान में रख सकते हैं, जो it's to be pointed that if this squares, maybe the color is blue, this squares color is red, but it's learning the structure, not the color. So if now you are giving a yellow color square, it will also call that the yellow color box is also a square. It will not tell that it's a round. Okay. Now now for example you are giving a round. Here you are giving a structured round in testing data, but you don't have round in your model, okay, in your training data. So ये क्या ये predict कर सकता है? नहीं कर सकता है। So ये एक what I say disadvantage है इस supervised learning का। सो आप जो भी डेटा दे रहे हो वो क्या है आप उसको बोल दे रहे हो। सो व्हाट काइंड ऑफ लेवल, what kind of data you are giving, you are telling that the what is that, and ये मॉडल उसको लर्न कर रहा है एंड आपके सुपरवाइज में ये लर्न होगा। एंड देन इफ यू आर गिविंग टेस्टिंग डेटा फ्रॉम योर, जो भी डेटा आपके पास है उसके अंदर से, जो मैं फर्स्ट बोला जाए आप स्प्लिटिंग कर रहे हो 8:2 में। सो फ्रॉम टू पार्ट you are giving some data as a testing data to the prediction model and it will predict that what kind of structure it is. Now, suppose we have a data set of different types of shape which include square, rectangle. So जो मैंने कहा ये पर यही है जो इसका that is a triangle, the square and the hexagon. What is that? That is written here. And then the steps, that which steps are involved. So first determine the type of the training data set, then collect and gather the level training data, then split the training data set into training data set, test data set, and validation data set. Now determine the input features of the training dataset, which should have enough knowledge so that the model can accurately predict the output. Determine the suitable algorithm for the model, such as support vector machine, decision tree, etc. So in supervised model, there are different kind of models: support vector machine, decision tree. In the next video, we're gonna learn about the linear regression. Okay, linear regression model. देन आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा, हम ये सभी मॉडल पढ़ेंगे। एंड देन एग्जीक्यूट द एल्गोरिथम ऑन द ट्रेनिंग डेटा सेट। समटाइम वी नीड वैलिडेशन सेट एज कंट्रोल पैरामीटर्स व्हिच आर द सबसेट ऑफ दोस ट्रेनिंग डेटा सेट्स। Now, evaluate the accuracy of the model by providing the test set. If the model predicts the correct output, which means our model is accurate. Now, there are two types of supervised learning जो इसका मॉडल को क्लासिफिकेशन करेगा। वन इज द रिग्रेशन, अदर वन इज क्लासिफिकेशन। सो इन द रिग्रेशन मॉडल, द linear regression model is very much important for our syllabus. And then in the regression algorithm are used if there is a relationship between the input variables and the output variables. So it is used for the prediction of continuous variables such as weather forecasting and market trends. And below are some popular regression algorithms which come under the supervised learning. There is a linear regression, regression tree, non-linear regression, Bayesian linear regression, and polynomial regression. So in the next video we're gonna learn about this linear regression. Now in the classification model, their classification algorithm are used when the output variable is categorical, which means there are two classes such as yes or no, male or female, true or false. This kind of examples are there. That is, just you can imagine that
यू विल बाय, सो आपका मॉडल है और आपके पास हर एक टाइप का एज और थिंकिंग का कस्टमर का लिस्ट है, एंड यू आर गिविंग दैट लिस्ट टू योर मॉडल दैट ये कार खरीदा क्या, it will buy a car or not, yes or no, so that your model will predict that it will buy the car, yes or no. एंड जो जो कस्टमर खरीदेगा, सो आप वही कस्टमर को कॉल करके आस्क करेंगे जो सर आपका कार खरीदेंगे। सो ये एक मॉडल है आपका, एंड यू नो दैट this model very much used nowadays because we have a large data set of customers that we get from different places. So जो कंपनी है वो आपको जब कॉल करेगा, आपका एक्यूरेसी रेट देख कर ही आपको कॉल करेगा जो आप खरीदेंगे और नहीं। सो ये टाइम का एक सस्ट्राई करेगा, सो इट विल गिव यू अ गुड टाइम। So now, spam filtering. Now, spam filtering. I mean, here it is written because yes, in spam filtering we are using this kind of algorithm because ये जो email है वो spam है और कि नहीं है, ये आपको ये random forest, decision trees, logistic regression, support vector machine, ये model से आपको याद आएगा और you can predict that from this kind of models. सो लॉजिस्टिक रिग्रेशन आपका लीनियर रिग्रेशन के बाद हम सिखाएंगे आपको वीडियो में जो सिलेबस में आता है पर एंड you have to remember this definition because in universities it comes that is what is classification, what is regressions, and two type of supervised learning you have been you can be asked, and you can be asked in your short question in 2 mark question, that is write down the different name of the models in regression. So आपको ये नाम भी याद रखना पड़ेगा। Next it comes advantages of supervised learning, the why we will use the supervised learning. So, with the help of the supervised learning, the model can predict the output on the basis of prior experience. In supervised learning, we can have an exact idea about the classes of objects, and supervised learning model help us to solve various real-world problems such as fraud detection and spam filtering. And yes, of course, there are some disadvantages. That is, the supervised learning models are not suitable for handling the complex tasks. So, if you have a simple task, then it will work very good. And in supervised learning cannot predict the correct output if the test data is different from the training data sets. That I have told you earlier that you need the same kind of data in your training and your testing data set. Otherwise, if the testing data set जो आइटम है वो आपका ट्रेनिंग डेटा सेट का आइटम से अलग होगा, देन इट कांट प्रेडिक्ट एनीथिंग। सो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ये बहुत बड़ा डिसएडवांटेज है सुपरवाइज्ड लर्निंग का। And the training requires lots of computation time. That's real if you are using i3 Intel i3 or AMD A8 processors, then it will take for a simple algorithm maybe you need 30 minutes to 40 minutes time, and if you are using good hardware like Intel i7 processor or AMD Ryzen models, then maybe hardly it will take 10 minutes or 5 minutes, as the good hardware you need and good powerful graphics card and processor you need to do this kind of works. So training requires a lots of computation time. That's true because it's very much complex, and in supervised learning we need enough knowledge about the classes of the objects. That is the वो level को आपको जानना पड़ेगा, you have to know the levels that what kind of elements there in the class. ओके, सो ये वीडियो तो यही तक ही होगा, ये मैंने बोल दिया आपका। सो दिस पॉइंट आप आपका नोटबुक में नोट कर लीजिए, प्लीज़ राइट डाउन दिस पॉइंट्स इन योर नोटबुक बिकॉज ये आपको सिलेबस में है, और इन यूनिवर्सिटीज़ यू कैन बी आस्क्ड टू राइट द डिसएडवांटेजेस ऑफ सुपरवाइज्ड लर्निंग, सो यू हैव टू राइट दिस पॉइंट्स. I am teaching you in that way that you can write down the question answer that can be asked in your universities. सो देर बहुत सारा वीडियोस है यूट्यूब में जहाँ पर आपको मशीन लर्निंग डीप लर्निंग के बारे में अच्छे से बोलेगा, प्रैक्टिकल भी दिखाएगा, बट वो से आप मे बी सीख सकते हैं, बट इन रियल लाइफ when you in your universities you will be asked to be write down your question answer, you can't do that
बट मैं इस तरह से आपको पढ़ा रहा हूँ जिसमें आप इस नोट से आप सब कुछ लिख सकते हो आपके परीक्षा आपका एग्जाम में. So that's why I'm trying to do that kind of PDF so that in your examination you can write down all of these things in your क्वेश्चन आंसर पार्ट. ओके, एंड ये डायग्राम भी आप आंक सकते हो. यू कैन ड्रॉ दिस डायग्राम आल्सो in your exam hall. So this is the question. So I write down all the PDFs in this way, that is one question and what will be the answer, and same question can be asked in your university questions also. So thank you for this video. In the next video we're gonna learn about the linear regression model. So thank you for this video. Please share and subscribe with your friends so that वो भी आपके एग्जाम में अच्छे कर सके. So thank you for watching this video.